Hello everyone. Today we are going to study a poem called A Far Cry from Africa, which is written by a West Indies writer called named Derek Alton Walcott. So he was born on the island of Saint Lucia in the West Indies, which was under the British colonial rule during that period. He was born in 1930 and he died in 2017, as you can see in the notes that I have provided you with. So, the point of our studies today is that we are going to try to understand the poem written by him, which is included in your syllabus, in the BA second year syllabus, optional English syllabus. So we are going to try to study the poem. A little bit of a background of Derek Alcott that I have to give is that Derek Alcott जो है, he was born in West Indies, but originally his family were from Kenya. Okay. सो इन दिस पोएम जो है, यहाँ इस पोएम में जो केनियन स्ट्रगल है, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो है, Kenya used to suffer a lot. The colonialism was brutal. It was very violent. The war, जैसे हम जो है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में स्टडी हमने की है ऑब्वियसली. So we don't have that much of an idea because our फ्रीडम स्ट्रगल वॉज रिलेटिवली वेरी पीसफुल. हम लोग ने वॉर किए हैं ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स से. 1857 में हमारा हुआ था एंड देयर वाज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया, सो इट कॉज अ काइंड ऑफ नॉन पीसफुल एनवायरनमेंट इन इंडिया. बट अदरवाइज जो है हम लोगों का, क्योंकि नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इट वाज रिलेटिवली पीसफुल एंड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 रिलेटिवली पीसफुल. सो शायद हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन केनिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो काफ़ी वायलेंट और काफ़ी ruthless रहा है. So there was loss of life, there was a loss of property, there was a lot of bloodshed. So it was overall a very violent जो है freedom struggle, हम ये बोल सकते हैं. So Derek Walcott जो है, he was born in West Indies, okay, सेंट लूसिया के आइलैंड पे उनकी पैदाइश हुई थी. एंड हिज एथनिसिटी इज मिक्सड. उनकी एथनिसिटी जो है वो मिक्सड है. हिज ग्रैंड पेरेंट, द वन सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट जो है हम बोलेंगे. सो हिज ग्रैंड मदर वॉज अ ब्लैक African Kenyan person, and his grandfather was a Britisher, so a white Britisher on that. So he always had a kind of problem with his identity, which along with his need to show that African people needed freedom, and his loyalty towards the language English and his loyalty towards the Kenyan people, it always clashed, which is what he has discussed in this poem, A Far Cry from Africa. और बहुत सारे अलग अलग कॉनोटेशंस जो है जुड़े हुए हैं इसके पोएम के नाम से भी जो है. सो ही इज़ एज कन्फ्यूजिंग एज द नेम ऑफ द पोएम, जो ही इज़ एज कन्फ्यूज एज द नेम दैट ही हैज़ गिवन टू द पोएम, ये हम बोल सकते हैं. सो दिस इज़ द बैकग्राउंड, अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड which was needed for me to explain why he has written the poem of Far Cry from Africa. Otherwise you can try to study the little bit of a background about Walcott himself. So Walcott जो है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया. he was a master of English language, and he has written many poems in the language itself. And वेस्ट इंडीज़ का कल्चर केनिया के कल्चर से काफ़ी डिफरेंट था, ये हमको याद रखना चाहिए, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ वॉज वेयर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन वॉज फ्रॉम फॉरेन लैंड्स. यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स या अफ्रीकन्स ही नहीं रहते थे, यहाँ पे अमेरिका के लोग आके सेटल हुए थे. यहाँ पे जो है फ्रेंच जो है पॉपुलेशन था, यहाँ पे
स्पेनिश पॉपुलेशन था, यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन था, तो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आके जो है वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स में सेटल हुए थे. सो कल्चर इज़ वेरी हाइब्रिड एंड वेरी क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन जो है हम कंसिडर करेंगे. उस वक्त भी जो है मेट्रोपॉलिटन कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है वेस्ट इंडीज़ में रहा करता था. सो एनीवे जो है हम डेरेक वॉलकॉट के बारे में हमने देखा कि ही वॉज अ West Indian writer who was divided between the loyalty towards his white blood and his black blood and the duty towards both of them. He was a teacher, playwright, poet, artist. जो है उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ये बात भी याद रखिए. So these are kind of important things that we have to remember about Derek Walcott. एंड अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो है, ये पोएम 1962 में पब्लिश हुई थी. एंड इट एक्सप्लोर्स द हिस्ट्री ऑफ अपराइजिंग इन केन्या. एक केन्या में अपराइजिंग हुआ था 1950s में, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था. ब्रिटिशर्स वर इस्टेब्लिशिंग द रूल इन केन्या एंड द पीपल वर टायर्ड ऑफ सर्विंग अंडर द British rule, and they were trying to remove the British population, remove the influence of Britishers in Kenya. And the Bantu people जो है, उनकी एक ट्राइब थी किकुयू जो है, जो कि हम बोलेंगे, उन लोगों ने अपराइजिंग स्टार्ट की थी, विच वॉज कॉल्ड द Mau Mau uprising, and the people who fought in that uprising were known as Mau Mau fighters. हमने इसके पहले भी एक राइटर जो है जिनके बारे में पढ़ा था, जो कि किकुयू ट्राइब को बिलोंग करते हैं, वो कि गुगी वा थियांगो थे. सो किकुयू ट्राइब का जो ये रेबेलियन था, इट वाज वेरी वायलेंट रेबेलियन एंड इट वाज 8 years long. एंड द अपराइजिंग वाज for revenge. It was very revengeful. It was very vengeful, and it was very violent as opposed to peaceful. And people were मतलब मेरा बोलने का ये है कि people were interested in revenge rather than justice, you know. And when that happens, obviously there is going to be a lot of problems in that area. So anyway, हम लोग जो है देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं. I'll try to read the poem and explain what he's trying to say. So look at the first paragraph of the poem. A wind is ruffling the tawny pelt of Africa, Kikuyu quick as flies batten upon the bloodstreams of the veldt. सो यहाँ पे जो है किकुयू को अफ्रीका की लैंड को टॉनी पेल्ट बोला है. टॉनी मतलब ब्राउन या येलोइश कलर. सो ऑब्वियसली देर इज Africa is called brown or yellow because there is not a lot of greenery in the land. So obviously the land is dry and barren, which is the color of the sand. Yellow is the color, yellow, brown is the color of the sand. And the wind is ruffling that sand. So the wind is actually a metaphor for the Britishers, right? The Britishers के लिए metaphor जो है उन्होंने use किया है of Africa, जो है अफ्रीका के की विंड को जो है रफल करने वाले कौन है? ब्रिटिशर्स है. किकुयू क्विक एज फ्लाइज बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्ट. सो यहाँ पे किकुयू जो लोग हैं, ये जो है यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम्स जो है बहा रहे हैं, और इनके अपोज में कौन खड़ा है? ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स किकुयू लोगों का ब्लड स्ट्रीम जो है यहाँ पे बहा रहे हैं. एंड एनीवे द मीनिंग ऑफ these lines is that the land of Africa, the land of Kenya is covered in blood streams. यहाँ पे इतना bloodshed हुआ है कि यहाँ पे नदियाँ बह रही है खून की basically. Corpses are scattered through a paradise, only the worm kernel of carrion cries. Waste no compassion on these separate dead. Statics justify the scholar's sighs. The salient of colonial policy, what is that to the white child hacked in the bed, to savages expendable as Jews? So the poet is calling the Britishers compassionless because they don't have the compassion for anybody who from the Kikuyu tribe who has died. And in retaliation, the Kikuyu people are the same, because if they attack the Britishers and they murder a white child in his bed, then they also don't show compassion for that child. So both the parties involved in this war, in this fight, are compassionless towards each other.
And for these people, the child is as expendable as a Jew. You know, Jewish people suffered a lot of atrocities by Hitler during the World War II, and Hitler never showed any compassion for them. So it is like that to the writer. We'll continue the poem in the next lecture, explanation in the next lecture.